Good morning, everyone. Good morning, students. This is Sheikh Shakir, your biology teacher. I hope you all guys are doing very well. So today we'll start the lecture series for class 11th. On the basis of the feedback which I have got from you guys, you have already completed three chapters in Unit 1. That is the chapter number 1, Living World, second, Biological Classification, and third, Plant Kingdom. So today we'll start the next chapter, that's chapter number 4, which is about Animal Kingdom. In the previous chapters, I hope you have gone through the basics of classification, taxonomy, and different classifications given by different scientists at different times. So one of the classifications which is most accepted, which we are following today, is Robert Whittaker's classification. The Robert Whittaker divided the whole living world into 5 kingdoms. Before this, 2 kingdom, 3 kingdom, and 4 kingdom system classifications were given, but because of some exceptions, finally उन exceptions को clear किया गया Robert Whittaker's 5 kingdom system classification. So whole living world is divided into 5 kingdoms. First, Monera. Second is the Protista. Third, Fungi. Fourth one is the Plantae. Next is the Animalia. These are the 5 kingdoms, and 4 kingdoms you have already. I hope you have already discussed it with your previous teacher. So today we'll start the next one, that is the general animal kingdom. As you all know, there are over 1 million species of animals described till date, and animals differ from each other, but there are some characteristics which are common to every animal. So first of all, we will start our lecture with the general aspects of the animal kingdom. It's very important. It's according to your textbook. So सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम की जनरल एस्पेक्ट से, जनरल फीचर्स ऑफ एनिमल्स. So let us start our today's lecture. First of all, let us see which contents we are going to cover in this lecture series. The first general aspect of animals is habitat of animals. You are familiar with all these concepts because in class 9th you have discussed these things in brief, but today आज हम इनको थोड़ा सा elaborate करने की कोशिश करेंगे. Second is levels of organization. Third is body plan in animals, symmetry and plan, germ layers and segmentations, coelom in animals, and basic classification of animals जो हम final में देखेंगे. It will take 3-4 days to complete this series. So let's start the first aspect of the first characteristic of animals, that is the habitat of animals. You are familiar with this concept and you also know the definition of this, but today we will try to elaborate this habitat. Habitat is simply the place where an organism lives, where he finds the optimum conditions of food and shelter. जहाँ पर उसको food and shelter के optimum conditions में मिल जाता है, उसको हम कहते हैं habitat. ठीक है? For example, wild animals, they live in forest. In forest, they get food, they get shelter. So we call forest as their habitat. We can also define habitat as the physical and the geographical space where an organism lives. ये एक जमीन पे एक physical geographical space है जहाँ पर एक organism रहता है, जहाँ पर उसको food shelter दोनों मिल जाते हैं. We call this as a habitat. तो on the planet we have two things only. First is water and second is land. ठीक है? तो on the basis of this habitat is of two types. First is the terrestrial habitat and second is the aquatic habitat. Terrestrial habitat means those organisms who live on land. दो ही जगह पे रह सकते हैं, या तो जमीन पे रहेंगे या तो वाटर में रहेंगे. If an animal lives on land on dry earth surface, we call that as terrestrial habitat. If we start from the invertebrates, ठीक है, पॉरिफर्स है, सिलेंट्रेट्स है, फ्लैट हेलमिंथीज, एस्केहेलमिंथीज है, वो सारे उसमें उसके बाद एक फाइलम आता है जिसको हम आर्थ्रोपोड्स कहते हैं. आर्थ्रोपोड्स में कुछ मेंबर्स होते हैं जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में अडॉप्टेड है. कुछ उसमें मेजर वही है, वाटर में भी रहते हैं, लेकिन जैसे कि इंसेक्टाइड क्लास है, उसमें इंसेक्ट्स है, स्पाइडर्स है, वो कंप्लीटली अडॉप्टेड टू टेरेस्ट्रियल लाइफ. वी विल सी दैट लेटर ऑन. Second is the chordates. What are chordates? We will discuss this in lectures ahead. Chordates में जैसे कि mammals है, birds है, reptiles है, amphibians है, they are also adapted to the terrestrial habitat. That means they live on land. They do not live in water.
इसमें एम्फीबियंस एक टर्म आ जाती है. एम्फीबियंस आर एनिमल्स, दे लिव बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, बट दे spend most of the time on land, and for say for example reproduction, they went to water. तो बहुत सारी कुछ काम करने के लिए, कोई रिप्रोडक्शन करने के लिए वो वाटर में कभी कभी जाते हैं, लेकिन मोस्टली वो दे लिव ऑन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. ठीक है. अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है लैंड. ठीक है. तो लैंड पे भी वो कहाँ रहते हैं, किस तरह से रहते हैं? On the basis of this terrestrial habitat is of different categories. So let us see the first. There are animals on the land who have ability to fly. That means who have structures like wings. Those animals who have wings, they can fly in air. We call them as aerial or flying animals. Familiar example: birds, bats, almost all those animals who have wings, they can fly. Second one is the arboreal animals. There are some animals who used to live on trees. We call them as arboreal animals. The animals, जो animals पेड़ों पे रहना पसंद करते हैं, उनको हम कहते हैं arboreal animals. जिसमें monkeys आप देखते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं टहनियों पे. Next one is the fossorial animals. There are some animals who have ability, who have smart grip, who have such adaptations in their class, so that they can climb on the walls. We call them as fossorial animals. So fossorial animals वो animals हैं जो who can climb walls. Like wall lizards is the best example. Next is the cursorial animals. The animals who are adapted to run very fast, who have ability to run very fast. Deer, dog, horse, they have ability to run very fast. That is why we call them as cursorial animals. These are the different categories of the terrestrial habitat. Now let's move on to the next one, that is the aquatic. Aquatic means water, the animals who live in water. But water is of two types. First is the fresh water, second is the marine water. Fresh water means, what is fresh water? Salt-free water. Where you will find the fresh water? Ponds, lakes, rivers. So those animals who live in fresh water, we call them as freshwater animals. Those animals who live in marine water like seas, we call them as marine animals. So on the basis of water में तो रहते हैं, लेकिन water पे रहते कहाँ हैं? Bottom पे रहते हैं, surface पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं? उस space पे there are different categories of aquatic animals. First is the pelagic. Pelagic means the animals who live on the surface of open water bodies. If there is a land, they live on the surface of water. वो surface of water पे रहेंगे. We call them as pelagic. There are two categories of pelagic. First is the zooplanktonic. Second is the nectonic. Both zooplanktons as well as nectons, they live on the surface of water. Then why we call them as necton? Why we call them as zooplankton? There is a difference. ठीक है. Zooplanktons live on the surface of water, but they flow passively with water current because they do not have much musculature. They cannot move against the current of water. They move passively with water current. We call them as zooplanktons. जिसमें बहुत सारे जैसे कि aquatic protozoans है, larvae है, crustaceans है. They belong to the zooplanktons. Like प्रोटोजोन सर मुझे बता देना कि किस फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में किस किंगडम में इनको रखा गया है प्रोटोजोन्स के. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस. नेक्टॉन्स नेक्स्ट. अगेन नेक्टॉन्स लिव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. They also live on the surface of water. But then what is the difference between zooplanktons and nectons? Nectons can float actively in water. Even they can go against the water, and they have musculature, they can move, they can go against the water current. जिसमें बहुत बड़ी बड़ी फिशेस का नाम जैसे शार्क, सैस्केट, सेरेस, they can move against the water current. Next is the benthos, means bottom. Those animals who live at the bottom of the water bodies. It's not कि हर कोई एनिमल वाट बॉटम पे रह सकता है, नहीं. These bottom dwelling animals have such type of organization so that they can bear the enough pressure of water. तो हम नहीं रह सकते, कोई और नहीं रह सकता वहाँ पर. इनमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो हम देखेंगे किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है. तो उसको हम कहेंगे बेंथोस, जो बॉटम पे रहेगा. जैसे कि डीप सी फिशेस है, मिनी इकाइनोडर्मेट, स्टार फिशेस, स्पॉन्ज, कोरल्स, ये बॉटम पे रहते हैं, इनको हम कहेंगे बेंथोस. तो पेलाजिक सरफेस डिवेलिंग, जूप्लैंक्टन सरफेस पे बट मूविंग पैसिवली, नेक्टॉन surface पे but moving actively against the water current, benthos moving dwelling at the bottom of the seas or water bodies.
Next is the habitus of animals. जो हमने पढ़ा वो habitat था. The place where an organism live, where he finds food and shelter. What is habit? The way of living, the nature of living. If you are living in a habitat, how you are living there? Are you living in isolation? Are you living singly? Are you living in groups? Are you living in colonies? Are you dependent on other organisms? Are you independent on other organisms? How what you take, क्या खाते हो वहाँ पर, वो हम देखेंगे habits में. That means habit का मतलब है nature of living is called a habit. तो इस बेस पे भी डिफरेंट कैटेगरीज है ऑर्गेनिज्म में. सबसे पहला जो है सॉलिटरी. वो एनिमल्स हु प्रेफर टू लिव सिंगली नॉट इन ग्रुप्स. वो हमें ग्रुप्स में झुंड में कभी नहीं रहते हैं, वो सिंगली रहते हैं. जैसे कि अर्थवर्म्स का टीनिया का कभी आपने झुंड नहीं देखा होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज द कॉलोनियल एनिमल्स. वो एनिमल्स हु प्रेफर टू लिव इन ग्रुप्स आर कॉलोनीज. ठीक है. दे आर कॉल्ड कॉलोनियल एनिमल्स. जस्ट लाइक वॉलवैक्स. वॉलवैक्स इज ए ग्रीन एल्गा. ठीक है. इसकी भी बहुत बड़ी कॉलोनी होती है. हनी बीज, मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल इज हनी बीज. हनी बीज लिव इन कॉलोनीज. देयर आर thousands of members in a colony. Termites, wasps, they are all colonial animals because they live in colonies. Next is the free living. If you are living on land, if you are living in water, anywhere, क्या आप इंडिपेंडेंटली रहते हैं या किसी पे डिपेंड है? अगर आप इंडिपेंडेंटली रहते हैं, खुद ही फूड और शेल्टर मैनेज कर लेते हैं, तो आपको कहेंगे फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे हम हैं, डॉग्स हैं, सारे हैं, वो सारे फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट इज द पैरासिटिक एनिमल्स. वो एनिमल्स जो दूसरे पे डिपेंड है. दोज एनिमल्स हु आर डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स. जिस पे वो डिपेंड होते हैं उसको हम होस्ट कहते हैं. जो उसमें रहता है उसको हम पैरासाइट कहते हैं. जैसे कि टेपवर्म्स होते हैं हमारी बॉडी में, लव्स होते हैं हमारे सेल में, लड़कियों को ज्यादा पता होगा. ठीक है. तो उनको हम कहेंगे पैरासाइट. या एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब ऐसे ही बता रहा हूं मैं. आपके पेरेंट कमाते हैं और आप उड़ाते हो. ठीक है. दैट मींस आप पैरासाइट है उसके लिए. किसके लिए? पैसों के लिए. ठीक है. जब तक आपके पेरेंट कमाएंगे नहीं, आपको नहीं मिलेगा पैसा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द saprophagous animals. Simple. जो those animals who take food from dead and decaying matter. वो dead and decaying matter से अपना जो फूड है हासिल करते हैं. They are called saprophagous animals. Next is the sanguivorous animals. जो animals blood पीते हैं उनको हम कहते हैं sanguivorous. कौन पीता है? आज रोज पीता है. That is mosquito. लीच है एक, वो भी sanguivorous है. अब on the basis of whether an animal is motile or non-motile. If an animal is non-motile, lacking the appendages, we call them as sessile. Sessile means if an animal is not able to move from one place to another, here and there, we call them as sessile animals, like Damania. Yeah, motile animals having appendage. We have appendage. We can move from. We can walk. We can run. So we are called animals. And these human beings are called motile animals. नेक्स्ट इज द डायर्नल एनिमल्स. आप एक्टिव कब रहते हैं, सोते कब हैं? हम एक्टिव कब रहते हैं? दिन में. सो जो दिन में एक्टिव रहेंगे उनको डायर्नल कहते हैं. Those animals who are active during the daytime, they are called diurnal animals. जैसे मैन है, हॉर्स है, डॉग है, दिन में काम करता है, खाता है, पीता है, जॉब पे जाता है, ठीक है, टीवी देखता है, जिम में जाता है, तो हम सारे काम दिन में करते हैं. सो वी आर डायर्नल. वी आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे एंड वी रिलैक्स ड्यूरिंग द नाइट. ठीक है. Nocturnal means those who are active during the night, relax during the day, just like cockroach, bats. ठीक है. They are called nocturnal, active during the night time. Next one is the crepuscular. That means animals which are active. ना तो वो रात को होते, ना तो दिन को होते, शाम को होते for obtaining their food. For example, rabbit दिन में बिल में छुपा रहता है, शाम को निकल जाता है खाना खाने के लिए. ठीक है. Caprophagous. एक बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी होते हैं who have the habit of eating their own fecal matter. They eat they remove the fecal matter on one side and eat the fecal matter on other side and redigest it. ठीक है. It's like a rabbit. जो fecal matter अपना खाएंगे उनको कहते हैं caprophagous animals. And last three are most familiar terms: herbivores, carnivores, and herbivores. Herbivores means animals
who eat plants, carnivores flesh and omnivores both. आई होप कि आपको ये हैबिटेट समझ आया होगा। इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट प्लीज़ कीजिए और उसमें लिखिए कि आपको कहाँ पर कंफ्यूजन है, मैं वो कंफ्यूजन ज़रूर क्लियर करूँगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे लेक्चर को कहीं पे मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, वो भी लिखिए, तो मैं मॉडिफाई करने की भी कोशिश करूँगा। सो टुमारो वी विल टेक द अनदर एस्पेक्ट ऑफ द एनिमल किंगडम, दैट इज़ द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंशाल्लाह we'll see that tomorrow. Okay, bye, take care, bye bye.